Just check out the view. You won't get to see this view anywhere. Those mountain ridges, mashallah, great. Here it is. ऊपर के थोड़े से व्यूज देखते हैं कि कैसा है. चलिए. तो मैं ना थोड़ा हाइक करके थोड़ा ऊपर चल रहा हूँ. बस मैं थोड़ा आगे आगे ऊपर चल रहा हूँ. मेरी तो सांस फूल रही है अब. यहाँ तो पहाड़ियाँ बहुत ही नज़दीक है. अभी तो और नीचे जाना है मुझे. जल्दी जल्दी निकलेंगे और किसी और स्पॉट पर जाएंगे. आज का जो दिन था वो भी काफ़ी अच्छे से गुजरा. मैंने अपनी राइड जो है घर से ऑलमोस्ट 2-2:30 बजे के करीब शुरू कर ली. प्लान यही था कि कोई भी एक रैंडम जगह पे जाए और कुछ नई चीज़ें ना विज़िट कर ले. ये वाले शॉट्स तो बहुत ही अच्छे हैं. और सब्सक्राइब, किसी भी वजह से आपको आज का जो वीडियो है अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. टेक केयर एंड राइड सेफ. It was pretty much fun coming out to this place. I enjoyed so much. Though I started my ride very late, but then it was very good. जिस आस्तान शरीफ की मैं बात कर रहा था वो यहाँ से है. लास्ट टाइम मैं Yamaha R50M पे आया था यहाँ से. Pretty good ride. And I'll be taking this route again. Let's push it a bit. Lovely. Some local chap. The temperature is dipping, but I do have my jackets in place today. And what else? Just check out this look. Wow. I mean, you won't get these roads anywhere, man. Oh man, I just wanted to, shoot something good that I can, enjoy route. It's a good route. I have to be very much careful while taking these turns. I believe this is the best spot here. I can, shoot some good shots over here. Check out the view. You won't get to see this view anywhere. Those mountain ridges, mashallah, great.
Here I am at yet another beautiful location. मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पर ना थोड़ा एक ब्रेक ले लिया. I can show you out the views here. यहाँ पर भी बहुत सारे बागात है सेब के. टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 5:30 का एंड अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि व्यूज़ ही इतने अच्छे हैं तो क्या करें. एंड भूख भी काफ़ी लग रही है अब. यहाँ से तो रोड ऐसा ही मिलेगा, यहाँ से ज़्यादा स्पीड ले नहीं सकते हैं क्योंकि ABS में इस वाले रोड पे चलना इज़ नॉट गुड. लेट्स ट्राई हाइपर व्यू फॉर नाउ. पता नहीं आगे से मैं देखता हूँ रास्ता कहाँ से निकलना है. वाह वाह वाह, यहाँ से रोड कुछ अच्छा है बट ऑलवेज अलर्ट. एंड यहाँ से भी कहाँ जाते हैं, मैं क्या कहूँ, मैं तो खो गया ना. लेट्स आस्क हिम. मेन रोड से पर ही मैं खुद इस रास्ते से वाकिफ़ नहीं हूँ. आई थॉट मे बी ना बाहर निकलने के बजाय मैं इस गांव के अंदर अंदर ही चल रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई जस्ट कंफर्म कि ये रूट सही मेन रोड को कनेक्ट करता है. बिल्कुल भी रश नहीं है यहाँ पर. हम देख सकते हैं तब कभी कभी कोई गाड़ी मुझे दिखी यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है. ओए 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 ओए, बस 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 बस. It roars like anything. I mean, I love it. मैं ना मेन साइड की कौन पता नहीं कहाँ से मैं चल रहा हूँ यार. ग्रेविटी की वजह से भी ब्रेकिंग में काफ़ी फ़र्क पड़ता है. देख लो जी, केयरफुल विद इट. वो अजान हो रही है यार, खुदा का साहब. यहाँ पर पहुँच चुका हूँ आरी पांथन, USB आरी पांथन. आई डोंट नो अभी वीडियो कैसा आ रहा होगा, अंधेरा तो छा चुका है, विजिबिलिटी भी काफ़ी डिम है. जो GoPro 11 है इसकी तो नाइट विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, इसका सेंसर बहुत अच्छा है. मैं ना अपना वो लाइव प्रीव्यू देख रहा हूँ अपने GoPro पर, जो मैं अभी रिकॉर्ड करके देख रहा हूँ प्रीव्यू, और जो एक्चुअली मैं नेकेड आई देख रहा हूँ उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इट स्पीक्स ऑफ द लो लाइट परफॉर्मेंस ऑफ दिस कैमरा. मुझे खड्डे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या बताऊँ मैं. Machine beast. What needs to be done is you have to lean to make this machine turn at high speeds. If you fail to lean at high speeds to make it turn, you're gone. So much of traffic in this Margam road. What to do? Had to live with it for a few minutes, though I'm trying to zip in, but these people.
Be careful with it, man, like anything. Oh, another flyover there. I'm just trying to test out my GoPro Hero 11 Black in these dark conditions. Let's see how it performs. That's it. Okay. Okay. Oh, I cut it all. That's fantastic. आज की राइड के तो बहुत मजा आ गया बॉस. Let's go. Easy.